ओके जी। Bismillahirrahmanirrahim. So, Assalamu alaikum, students. So, the question that we have today is from the most recent paper, okay? That is basically October, November 2023, okay? So, this is from October, November 2023, paper 3 and variant 2, which is basically our variant, okay? It is basically our paper, October, November 2023, and paper 3 too. And the topic, if you read the question here, the source, you will say it is a manufacturing account question. But when you will start solving and when you will read the parts, when you will read what is the requirement, कि आपको जो part solve करने, question solve करने, इसमें part B, C, D, you will understand this is manufacturing accounting and also involving IES, that is International Accounting Standards as well. Getting it, guys, with me following? So that is why I said, okay, it looks a very small page, looks a very small information for source A. If you look at source B question, it's a huge question, looks like a huge question, but source A is very small. But eventually the question is tricky, difficult as well. And it's, I think, the first time, or what we can expect is basically, and what I'm expecting is, because there's October, November 2023, so in May, June 2024, you might have two topics merged together. Okay, this is what is completely predicting it, कि सोर्स ए फॉर क्वेश्चन नंबर वन के दो टॉपिक्स को मर्ज करके भी टेस्ट किया जा सकता है। और अब यही होने वाला है, which I can clearly see, because उनके पास अब only three questions आपको टेस्ट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग? So that is very important to be understood. Got it? This is very basic. Let's start the question. Okay, everyone got this? So that is why this is important. If you make mistakes in that, कोई problem नहीं है. We'll check that as well. But you need to understand how this is being solved. Okay. So we have this company, HPLC is a manufacturing company. So HPLC is a manufacturing company. It applies a rate of factory profit of 25%. So factory profit 25% है for some years. And its draft statement of profit and loss is given as the new name is this, the statement of profit and loss for the year ended 30th June 2023. So one of the important things to understand here is that in this case, you don't have to make the income statement, you don't have to make the manufacturing account. Okay, already they have done the manufacturing account, and they are giving in front of you is what, students, is the statement of profit and loss, which is also called income statement. So I'll repeat my point, student. You don't have to make a manufacturing account. This is very rare as well, because you don't have to make manufacturing account. You already have the revenue, that is income statement, available, which is also now called statement of profit and loss. And these are the values that we have: revenue, sir, we have revenue, and we have basically the revenue, inventory of finished goods, cost of productions, all of them, closing inventory as well, manufacturing profit, factory profit, administrative expenses, distribution cost, profit for the year. What we have to do is basically, they are telling us couple of adjustments here, that the inventory values, two adjustments are there: the inventory values and the cost of production were all shown at the transfer value. So it's a very important point, that the inventory values and the cost of production were all shown at transfer values, which means कि इन्होंने इसमें markup charge किया हुआ है, sir, and already according to the format, जो फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, और जो फॉर्मेट है उसमें हम इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री हम ट्रांसफर प्राइस पे ही लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइस शामिल होती है। तो दे आर जस्ट कंफर्मिंग दैट दीज आर एट ट्रांसफर प्राइस। एंड देन एडजस्टमेंट नंबर टू इज that the increase in the provision for unrealized profit, it is included in the administrative expenses, जो हम सेकेंड एडजस्टमेंट करते हैं। फॉर दिस पर्पस आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आना चाहिए, कि मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द ड्राइव एज वेल, कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट, जो फैक्ट्री प्रॉफिट होता है, उसके बाद आप एडजस्टमेंट करते हो फॉर द अनरियलाइज प्रॉफिट। यू हैव टू डू द एडजस्टमेंट फॉर द अनरियलाइज प्रॉफिट। सो वो कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में शामिल है। गाइस गॉट इट? So let's start with the question. What is the requirement here? As we said, this is October, November 2023, paper 3 variant 2. So what is there first for 3 marks? First basic 3 marks. It's simple. You have to calculate the values of the following at cost. So they are checking your concept, whether you know how to do the mathematical calculation and get the values of the following at cost. So I'm expecting no one have done this wrong,
because this is not tricky and not difficult. You have to just find out the inventory of finished goods, the opening inventory at the cost. Okay. So it's very simple. Just remember the formula, understand. The cost will always be 100%, sir. Cost is 100%. Whatever the whatever the percentage is, you will add that and you will get the transfer price. Okay. Whatever the percentage of the factory profit is, you will add that and you will get the transfer price, students. So that is what we need to understand here, that it is already mentioned in the question. Okay, guys, getting it? This is already mentioned in the that is already mentioned in the question, that the factory profit is, sir, 25%. So here we go, sir. You have to just add 25% in it, and that is basically the transfer price, that is 125%. How many got this clear? Cost will always remember, sir, cost is always 100%. You add 25% in the factory profit, you will reach the transfer price. We have to find the opening inventory at cost. We have to find the closing inventory of the finished goods at cost. And we have to find the cost of production at cost as well. Okay, they have put in bold marks as well. Everyone getting it? Can I get quick response? Let me know if anyone have any doubts. So here we go, sir. What is the, let's quickly write it down. Opening inventory is 25,000 and 237,500 is cost of production and 27,500 is the closing inventory. So here we go. Let me write it down, that 25,000 and 237,500. Okay, guys. These are the values at transfer price. 25,000. Is everyone getting this? 25,000, 237,500, right? And we have 27,500 as the 27,500 as the closing inventory. Getting it, guys? Of the finished good. We are talking about finished goods here. So always remember, it's very simple for each of them. So 25,000 is what? Anyone? Is it cost or transfer price? 25,000 is, sir, the transfer price. So just have to do simple, sir, because we already know that this is the transfer price. So 25,000 stands for 125%, sir. And you only need to get the cost value. So it will be at 100%. That will be the cost value. Do the ratio, apply ratio mathematics, and you will be able to get it. That 25,000 multiplied by 100 divided by 125. Sir, I am getting that as 20,000. Okay. Understanding? Just mathematical concepts can be applied here. So it will be, sir, 20,000 is the answer for the for 1 mark. 20,000 is the cost of the opening inventory at the transfer price. Okay, understanding, everyone? Clear? Inventory of finished goods at the start of the year, 20,000 at cost. Okay, is everyone getting it? Guys, with me following? Similarly, every you will have to do it with everything is like the same. This is 125%, sir, because this is a transfer price and they are mentioning it as well. Okay, don't have to worry about it, students. They are already mentioning it. Sir, the cost of production and the inventory values, I'll just put it in the rectangle as well. The inventory values and the cost of production are all basically at the transfer value. So we have just decided what is transfer value. In percentage form, it is 125 because you have to find the cost, sir. So just applying mathematics, that 100% you have to find. If anyone is struggling to get the calculation, let me do it for this one. It will be, sir, 237,500 multiplied by 100 and divided by 125. So I'm going to get the answer, sir. So let's do it in the calculator. 237,500 into 100 divided by 125. So I'm getting this as 190,000. So cost of production at the cost value is 190,000. Okay, everyone getting it, guys? With me following? Clear? Understood? So we got the cost of production as 190,000 as well. Then we have to find the inventory of finished goods at the end of the year, 30th June 2023. So it will be the same thing. 27,500 is at the rate of 125%, sir. And then 100% you have to find, that is the cost you have to find. So these are free 3 marks. Okay. So let's do this one quickly directly again. So it will be simple, sir. I hope everyone got it. It will be, sir, 27,500 into 100 divided by 125. So I'm getting 22,000 as the answer here, which is, this is how we get 3 marks. First 3 marks we have got, students. Let me know how many got this, how many is clear. Okay, everyone getting it? Guys, with me following? Understood? How many people got this and how many needs explanation on this? Understood? Clear on this now? Any Yes. questions? Let me know.
Is this clear? Must be clear. Okay, 3 marks, very important, very easy. You can't get this wrong. Otherwise, the next part is for 13 marks, students. We have to do workings as well in the below column. Next part is 13 marks. We have to prepare a corrected statement of profit and loss for the year ended 30th June 2023. And actually, if you look at it now, it's like correction of errors as well, the problems correction. It's not talking much about manufacturing. That's why it looks easy at the start के सर manufacturing account बनाना होगा, errors, expenses calculate करने होंगे. It's little bit not like that. Okay, we have to make a corrected statement of profit for the year ended 30th June, and I'll give couple of seconds again. So make sure if anyone have doubts, do ask now. Our year starts from 1st July 2022 and the year is ending on 30th June 2023. Okay, so this is very important to understand as well. Although in this question, timeline is not a much problem here, but just still for understanding purpose, always try to note it down, whatever your year is starting when and whenever your year is ending. Okay, guys, got it clear with me falling? Now, hello everyone, got this clear, guys, falling? Understanding? The main things are these, okay? So I'll give couple of seconds again so that everyone can think about it. We have 4 adjustments here, okay? Everyone getting it, guys? Any questions? Anyone part A? So we are moving to part B, which is 13 marks, almost half marks out of 25 marks. Half marks are for making the statement of profit and loss. We have 4 errors here. You can say that it's written there. After preparation of the draft statement of profit and loss, in the source, the insert that we read, sir, the insert that we read, there are the draft statement of the following items were discovered. There are some errors, there are some problems, okay, and there are basically 4 of them. So if anyone haven't read it before, you can just quickly. That's why it's better to first solve the question on your own and then understand the whatever the problem you are facing. So adjustment number 1, 2, 3, 4 are there. That is what we have to work it out. Okay, everyone with me following? Getting it, guys? Clear? So I'll give couple of seconds. Everyone can read it quickly. Adjustments till 1 till 4. Okay. Adjustments number 1 till 4. Part A is done, and I'm expecting no one have a problem in that. Okay. Yep, guys. Okay, so let's continue. So what we have been given are some errors. Okay. The first error is administrative expenses include $12,000 of cost which actually relate to factory. So there is some factory cost. Okay. We also call it overheads. Okay. Just try to make sure when we are solving this, everyone needs to understand that you need to make sure that you know manufacturing format as well, and you know the statement of profit and loss format as well. So in manufacturing account, if everyone can recall, we put the factory overheads cost. So sir, इसमें factory overhead cost थी $12,000 की, जो कि हमने वहां पर नहीं शो करी, मतलब हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं शो करी, तो वो मिस्टेक थी, और उसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में शो करा है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहा करते थे. आई रिपीट माई पॉइंट. पहला एरर की अगर बात करें तो सर वेरी इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया है और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं मांग रहे हैं. दे आर अगेन आस्किंग दैट इट्स द ड्राफ्ट वन. ओके, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इट इज द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. आपको इसको करेक्ट करना है बिकॉज इसमें मिस्टेक्स हैं, 4 एडजस्टमेंट्स वाली मिस्टेक है, तो हम उसको करेक्ट करेंगे. विच मीन हमें पीछे से भी जो मैन्युफैक्चरिंग से जो चीजें आ रही होंगी, तो मैन्युफैक्चरिंग से क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है सर, उसमें चेंजेस होंगी, फैक्ट्री प्रॉफिट में चेंजेस करनी होंगी. एवरीवन गेटिंग इट? Guys, I'll give couple of seconds to understand this as well. Make sure I'll repeat my point. अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कोई गलती करी है
तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें इसका इफेक्ट आ रहा होगा, हमें चेंज करना होगा, और फैक्ट्री प्रॉफिट के अंदर भी इफेक्ट आ रहा होगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर वो 12,000 इंक्लूड नहीं है, तो इसीलिए हमारा अंडर स्टेट हो रहा होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, फैक्ट्री प्रॉफिट में शेयर बढ़ेगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके गाइस, एवरीवन गेटिंग इट क्लियर? Falling and Yes. other changes as well. ठीक है, so there are adjustment number one and adjustment number two. Adjustment number two is a very good concept related, which is basically related with the goods sent on customer to on sale or return basis. So we'll discuss that as well, how you are going to do that. First, let's talk about adjustment number three and four. Okay, everyone with me, guys? Following? So let's talk about first adjustment number three and four. So let's understand how we are going to do these adjustments. Okay, everyone there with me? One and two पे हम discussion करेंगे. First we'll do three and four. Okay. So what happens when we read adjustment number three, sir? So it is here, students. A delivery van had a carrying value of $17,000. A delivery van had a carrying value of $17,000. A review happened, okay? A review on 30th June at the end of the year. We are at the end of this year. A review on 30th June 2023 showed that it had a fair value of 12,500. So, sir, the fair value is 12,500 and the value in use is $13,000. Okay, understanding, guys? Clear? Value in use is 13,000. No adjustment has been made as a result of this review. So first thing will be when you read this type of information that it is carrying value, value in use, fair value, these terms. So what will come in mind? Anyone? Guys, what should come in mind? Hello? Come on, let me know. What is it? Which IS is it? If we talk about adjustment number three here, sir, it is what IS? Come on, guys, it's not difficult. Must know. It is, sir, IS number 36, impairment of the non-current asset. So यहाँ पर हमें impairment को work out करना पड़ेगा कि there might be an impairment. Okay, understanding, students? Okay, sir, there might be impairment of the delivery van, okay, of the non-current assets. So there's a possibility, sir, okay, there will be an impairment of the non-current assets. Everyone getting that clear with me? Following? So IS 36 talks about impairment of the non-current asset. Is everyone getting? So what you have is basically the carrying value, which is also called the net book value. Okay, students. So sir, the carrying value, that is the net book value. Understand, sir, carrying value is $17,000. Okay, you will compare this and we will understand this thing that you will have to get the higher value. Okay, higher value recoverable amount. So what is the recoverable amount? Which one is better? Recoverable amount is basically the higher of the two. Okay, recoverable amount is the higher of the two. So it will be either you will choose the fair value or you will choose the value in use. Okay, so value in use के अगर आप इसको use करते हैं, इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आपको 13,000 की वैल्यू देगा। फेयर वैल्यू इज बेसिकली इफ यू सेल इट नाउ टू द मार्केट, अगर आप इस डिलीवरी वैन को, लेट मी एक्सप्लेन द टर्म्स एज वेल, ऑल्दो हमने वो IS 36 में क्लियरली एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसकी। fair value is basically fair value is basically if the delivery van को अभी हम sell करेंगे market में, तो we are going to get $12,500. And what is sir value in use? Value in use is basically if you are doing the net present value for that, अभी इसकी present value क्या है, इस मशीन से इस डिलीवरी व्हीकल्स वैन से $13,000 की सेटिस्फैक्शन मिल सकती है कि it is worth present value of it is 13,000. So you always choose the higher of the two, sir. So higher of the two क्या होगा students? Sir, it will be the higher of the two will be $13,000 के value and use को आप choose करेंगे. And whenever you choose whatever you choose, higher of the two value, you are going to compare it with the net book value, that is also called the sir carrying value as well. It is also so called sir carrying value. So you will compare 17,000 with 13,000. आपने अपने अकाउंट्स में, आपने अपने बैलेंस शीट में, स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपने इसको 17,000 की डिलीवरी वैन दिखाई हुई है, बट एक्चुअल वर्थ ऑफ इसकी जो है वो 13,000 है। एवरीवन गेटिंग इट? सर एक्चुअल वर्थ इसकी 13,000 है, एक्चुअल वैल्यू इसकी 13,000, और आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिव्यू हुआ, तो इसका मतलब सर यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, विच इज ऑफ 17,000 माइनस 13,000। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 4,000 का हमारे पास लॉस आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग? हाउ मेनी पीपल गॉट दिस क्लियर गाइस? फॉलोइंग?
Understood? Any questions? Let me know. Anyone, any problem, any doubts? ठीक है. एडजस्टमेंट नंबर 3 हमने सॉल्व कर ली कि 4,000 का लॉस होगा, जो कि हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कि करेक्टेड बनाएंगे. एवरीवन गेटिंग इट? करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम 4,000 का लॉस को इनकॉर्पोरेट करेंगे बिकॉज इम्पेयरमेंट पे लॉस आया $4,000. हाउ मेनी गॉट दिस क्लियर गाइस? सो एडजस्टमेंट नंबर 3 इज डन. ओके, is everyone getting it clear with me? Following. Next, it's all about adjustment number 4. And the company was facing legal proceedings. The company's lawyer had advised that the company had 35% chance of having to pay a fine. So this adjustment number 4 is not related with income statement. Okay. Sir, this adjustment number 4, students, let me write in the black color. Not related. Adjustment number 4 is not related to the income statement, okay, which is now called statement of profit and loss. So adjustment number 4 is not related at the moment. So we'll deal it with later. At the moment, let's start with adjustment number 1 and 2 and the statement of profit and loss that we have to make for 13 marks. Okay, everyone got it clear, guys, with me? Following. Is everyone getting this clear? Sure. Should be no doubt, right? No problems, right? So it will be simple, sir. Let's try to get 2 columns here, okay? And here we go. We start with revenue. As always, we'll start with revenue. That is the new one. So let's talk about what's the problem going to be, okay? So adjustment number 1 doesn't affect the revenue, okay, students? Adjustment number 1 doesn't affect the revenue. But now, most importantly, adjustment number 2, it is from the AS level. So they are testing your AS level concept as well. So when the year was ending, because our year is ending, sir, we have written it down here. Our year is ending on 30th June 2023. So during 2023, at the end of year, okay, guys, everyone getting it clear? During June 2023, goods were sent to a customer on the sale or return basis. So what is sale or return basis? पहले हमें ये understand करना पड़ेगा. तो students need to clearly understand कि sale और return basis का मतलब होता है कि आपने आपकी शॉप है, आप ट्रेडिंग करते हैं, आपका बिजनेस है, आपने किसी कस्टमर को गुड्स भिजवा दिए ऑन द सेल और रिटर्न बेसिस. इन सिंपल वर्ड्स, अगर पसंद आए तो रख लेना, नहीं पसंद आए तो वापस कर देना. अंडरस्टैंडिंग इन सिंपल वर्ड्स क्या है? अगर कस्टमर को पसंद आएंगे, सेल और रिटर्न बेस का मतलब है कि कस्टमर को पसंद आएंगे, रख लेगा, पैसे पे कर देगा उस गुड्स के, सेलिंग प्राइस पे कर देगा गुड्स की. अदरवाइज नहीं पसंद आए तो रिटर्न कर देगा. एंड ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, नॉर्मल ट्रेडिंग पैटर्न है. ये एक नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे वर्क करते हैं कि दे कम टू द शॉप एंड दे सर्च अराउंड फॉर द गुड्स. एंड व्हाट हैपेंस इफ दे लाइक द प्रोडक्ट, इफ दे हैव द रिलेशन विद द शॉपकीपर के, इस तरह का रिलेशन होता है, तो वो ये कहते हैं कि हम अपनी दुकान पे रख लेते हैं, अगर बिक गया तो आपको पैसे दे देंगे, अदरवाइज आपको गुड्स आपके रिटर्न कर देंगे. एवरीवन गेटिंग इट? सो इफ द गुड्स आर सोल्ड, they will make the payment, otherwise they will return the goods. Okay, the goods will return back. Okay, so what happened was that this manufacturing company, what's the name of it? Okay, this manufacturing HPLC, they send the goods to customers on the sale or return basis, sir. They send goods to customer on sale or return basis. Follow carefully the next understanding. The goods had been a selling price of $3,000. Goods की selling price थी $3,000, sir. And the goods selling price was $3,000 and the cost of 1,400. So cost 1,400 थी, selling price 3,000 थी before factory profit, and they had been treated as, sir, these had been treated as having been sold in the draft profit statement of profit and loss. So in very simple words, they are telling and explaining that although ये अभी sell नहीं हुए, although these are not sold yet, but what the problem is that HPLC company जो है, जो HPLC manufacturing company है, they have already treated it as a revenue. उन्होंने इसको revenue treat कर लिया है कि ये sell हो गए हैं. ऑल्दो ये गुड्स किस पे थे स्टूडेंट्स? सेल और रिटर्न बेसिस पर थे. सर ये गुड्स किस पे बेसिस पे थे? दे वर बेस्ड ऑन द सेल और रिटर्न बेसिस. So at the end of there, and the customer had not declared any intention to buy the goods. Customer ने अभी तक declare नहीं करा है कि whether he is going to buy it or return it. तो ये आप उनको as a sale count नहीं कर सकते. It is against the accounting concept as well, students. I'll tell you which accounting concept is there for this. But we need to understand कि ये आप सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. दैट इज वाई फर्स्ट एडजस्टमेंट विल बी कि उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है, जो कि हम रिवर्स करेंगे. इज एवरीवन गेटिंग इट? व्हाट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट, सर?
They have recorded the revenue, which is not possible, which is completely wrong. They have recorded as it as being sold. So 3000 का revenue ने record कर लिया होगा. Always remember हम इसको पूरा replicate करेंगे, okay? ये जो format है students, let me write it down. We are going to replicate this format, okay students? We are going to completely replicate this format. So if we talk about the revenue, sir, revenue is basically $370,000. So revenue will definitely be, हम revenue को remove करेंगे कि हमने उसको अभी तक हमने sell नहीं करा है. तो यहाँ पर हम simply we can do the adjustment here. बल्कि यहाँ पर space है तो हम यही करते हैं कि $370,000 minus the $3,000. This is adjustment number one, which will give us 1 mark out of the 13 marks. So 370,000 minus 3,000 कर लें students. So it will be coming, sir, 367,000 as the revenue. People got it clear, guys? This will be working number one, okay? Got it? Any questions? Anyone? Let me know. Guys, got it? 367,000 is the revenue. First adjustment is done. Next we talk about, अच्छा ये important address start करें कि अभी उन्होंने revenue record कर लिया. उन्होंने इसमें क्या करा था, उन्होंने इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था. इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो इन्वेंट्री सेल हो गई है. इसका मतलब वो थिंक कर रहे होंगे एच, देखें आपने अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मिस्टेक्स हैं. तो जब उन्होंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया था तो उन्होंने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी उस गुड्स को रिमूव कर दिया होगा. हमें उन गुड्स को वापस ऐड ऑन करना होगा, ठीक है? तभी हम इस पर वर्किंग करेंगे. अगेन नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज सर, नेक्स्ट वैल्यू विल बी इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट 1 जुलाई. तो एग्जैक्टली हम ऐसे कॉपी करेंगे इसको, बिकॉज एज आई सेड कि हम फॉर्मेट के हिसाब से चल रहे होंगे. तो यही फॉर्मेट कॉपी होगा, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स. ये होगा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स सर. और यहाँ लिख लेते हैं कि ये 1 जुलाई 2022 की बात हो रही है कि 1 जुलाई 2022 को इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स. ऑलवेज रिमेंबर we need to understand students के statement of profit and loss है and it will be at the transfer price, okay? हमेशा income statement में transfer price पे लिखा जाता है. तो सर वो आपके जो opening inventory है वो भी transfer price पे आएगी, that is 25,000. तो ये हम as it is copy paste करेंगे, okay? Understanding students, ये हम as it is copy paste करेंगे 25,000 opening inventory. Now comes the more important part कि cost of production है जो कि manufacturing account से आ रही होगी. तो अब हम cost of production लिखते हैं यहाँ पर students. सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसकी वर्किंग जो है हम बिलो करते हैं बिकॉज यहाँ पर अब कंजेस्टेड हो रही है. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग नंबर वन, लेट्स से दिस के वर्किंग नंबर वन है ये, और वर्किंग नंबर वन वी आर सॉल्विंग इट हियर गाइस, ओके? सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हमें वर्कआउट करना है स्टूडेंट्स. तो लेट्स वर्क इट आउट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगी, ठीक है? एवरीवन विथ मी फॉलोइंग गाइस, क्लियर? ठीक है. तो फर्स्ट थिंग विल बी कि पहले तो एक प्रॉब्लम है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम डायरेक्टली ये नहीं लिखेंगे कि ये तो फिगर है ही नहीं. तो अंडरस्टैंड करें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से. तो पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एक एरर था, हमें वो एरर करेक्ट करना होगा स्टूडेंट्स. तो हम यहाँ से फिगर लेंगे कि सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी 190,000. एवरीवन गेटिंग इट सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कॉस्ट पे आई थी वो 190,000 आई थी. तो फॉलो करिएगा स्टूडेंट्स कि सर 190,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. उसके अंदर एक एरर जो है वो करेक्ट करना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक 12,000 की कॉस्ट थी वो फैक्ट्री से रिलेटेड थी. एवरीवन गेटिंग इट गाइस विद मी? एक 12,000 की कॉस्ट थी जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड थी. तो 12,000 को भी सर इसके अंदर ऐड करेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फैक्ट्री कॉस्ट और ऐड हो रही है जो कि एरर था. तो जो भी वैल्यू आएगी उस पर हम अप्लाई करेंगे सर 125%. वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगी. ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स जिसे कहते हैं हम, ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स. एवरीवन गेटिंग इट गाइस विथ मी फॉलोइंग? दिस इज 2,02,000 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है, असल में 2,02,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और उसका हमें ट्रांसफर प्राइस पे शो करना है. तो हमें इसे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट ऐड कर देना है स्टूडेंट्स. सो इट विल बी 252,500. एवरीवन गेटिंग इट गाइस फॉलोइंग? सो बेसिकली ये आ जाएगा 252,500 as the cost of production, so that it will definitely have some marks, okay? Let me know how many people got this, understood, clear on this? Any questions, any doubts? फिर हम बात करेंगे इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड्स, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी रेज होगा, फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ 30th जून 2023. सही है. तो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स निकालनी है. अगेन आई एम एग्जैक्टली फॉलोइंग द फॉर्मेट. पहले रेवेन्यू था, फिर ये तीनों आइटम्स आए, तो हम वही निकाल लें कि इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स क्या होगी. तो लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट विल बी द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ओके स्टूडेंट्स? सो व्हाट वी नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड
कि इन्वेंट्री को भी हमें ट्रांसफर प्राइस पे शो करना है, ठीक है। इन्वेंट्री को हमें ट्रांसफर प्राइस पे शो करना है, तो अगेन विल गो द सेम अप्रोच वे कि इन्वेंट्री जो है उसकी कॉस्ट थी $22,000। उसमें क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं ना, हमें गुड्स को वापस, गुड्स अभी भी हमारी इन्वेंट्री है। HPLC कंपनी के लिए जो 1400 के गुड्स हैं ये भी उन्हीं के इन्वेंट्री है, तो उनको ये अपने पास रिकॉर्ड करना होगा, उन्होंने रिमूव कर दिया होगा। सो 22,000 वॉज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड 1400 इज द अदर कॉस्ट ऑफ। तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर भी, बल्कि इसकी एक एरर हमें बनाना पड़ेगा इसका, कि दिस इज वर्किंग नंबर टू। सो लेट्स डू द वर्किंग नंबर टू हेयर सर। 190,000 वर्किंग नंबर टू हेयर, कि ये जो कॉस्ट है $22,000, ओके, प्लस इसमें हमने $1,400 को ऐड करना होगा। स्टूडेंट्स, एवरीवन गेटिंग इट? गाइस फॉलो करें। तो ये आपकी जो है वो कॉस्ट कॉस्ट ऐड हो जाएगी। 22,000 वॉज ऑलरेडी द इन्वेंट्री, एक आइटम को हमने रिवर्स बैक करें तो वो पार्ट ऑफ इन्वेंट्री बन जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 22,000 प्लस 1,400, और इसमें जो है हम फिर इसको भी हम ट्रांसफर प्राइस पे शो करेंगे, जो कि आएगी 22,000 प्लस 1,400, सो इट्स कमिंग 23,400 सर। और ये भी ट्रांसफर प्राइस पे शो होगी, दैट इज 125%, बिकॉज ये हमेशा ट्रांसफर प्राइस पे शो होता है इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में स्टूडेंट्स, ओके। सो एवरीवन गेट्स दिस। सो इवेंचुअली यू आर गेटिंग नाउ द न्यू इन्वेंट्री at transfer price, that is 29,250, okay, new inventory at the transfer price. What will lead to, it will lead to sir cost of sales, okay, so cost of sales show karenge sir as according to the format they have done. So we'll do it the same way. We will get the cost of sales, students. So cost of sales aa jayegi opening inventory plus cost of production minus the closing inventory. So we got 248,250 sir. Subtract this, students, you are going to get the gross profit, okay. Let me know how many got this here. We'll take a cup. I expect everyone to have an understanding of this first section, first half part of it. So this is still gross profit, 367,000 minus this 118,750 is coming the gross profit, okay. This is basically the trading profit as well. 118,750 is the gross profit, the trading profit. Let me know, guys. Anyone have any doubt, any value you're not getting? I'll explain it again now. Anyone is not getting any value, so let me know, I'll explain it again. So at the moment we are going according to the format, sir. We have reached till the gross profit, and it's a completely different figure coming in. Next thing is the factory profit, which is again coming from the manufacturing account, which is what we need to understand. What is the factory profit coming here? So we'll add up the factory profit. Again, there will be adjustment in it. Why, students? Because sir, of the fact कि हमने 12,000 की कॉस्ट नहीं रिकॉर्ड की थी, उस पर हमें प्रॉफिट मिल रहा होगा, फैक्ट्री का प्रॉफिट, तो हमें वो अकाउंट फॉर करना होगा। एवरीवन गेटिंग दिस गाइस, क्लियर? So this will be, sir, working number three, that is based on working number three, that is based for the factory profit. So I think you can just simply say ये 125% the right. So I think we can just simply say here कि ये जो है 1,200 and 2,000 पे अगर हम निकालें 25%, so नहीं, एक सेकेंड, there's a mistake. यस, तो हम इसी पे वर्किंग करके निकाल सकते हैं कि 120,000 वॉज द 120,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना, तो सॉरी, ये 190 प्लस 12,000, ये वैल्यू मिस आउट हो गई है। तो 190 प्लस 12,000 इज बिकमिंग 2,02,02,000, ओके, एट द रेट ऑफ 20। तो यहाँ पर होगा कि 2,02,000 at the rate of 25% only. So we will get the answer. Okay, everyone getting it, guys? तो ये हमारा इस साल का फैक्ट्री प्रॉफिट आ गया कि हमने 25% का एड ऑन किया था, जो कि बेसिकली है 50,500। गाइस गेटिंग इट क्लियर विथ मी फॉलोइंग? फैक्ट्री प्रॉफिट आ जाएगा 25% ऑफ दैट, सो 50,500 हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट आ गया। हमने जो है वो इसकी जो एडजस्टमेंट होती है अनरियलाइज प्रॉफिट की, वो हम करेंगे बेसिकली अगेन, बिकॉज उन्होंने उसको अकाउंट फॉर किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, तो हम भी उसको उसी में अकाउंट फॉर करेंगे। दैट इज नेक्स्ट वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ओके। सो लेट्स वर्क इट आउट।
administrative expenses and the distribution cost. Okay, so next we have, sir, administrative. पहले ये बाद में ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, गाइस फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग, किसी को डाउट है प्लीज पूछे. एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, दैट विल बी, मेक श्योर डोंट फॉरगेट अबाउट द इम्पेयरमेंट लॉस. सो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी वर्किंग करनी होगी, तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं बिकॉज नथिंग इज रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन. सो 31,000 इज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. इसी में हम इम्पेयरमेंट लॉस को अकोमोडेट कर सकते हैं सर. तो इट विल बी वर्किंग नंबर 5 विल बी 31,000 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट minus the 4,000 impairment loss, and make sure whatever working you have done here should be done in that part. Okay, everyone getting it guys? ये working number 5 में part होना चाहिए. Is everyone getting it guys? Clear? ये आपने next page पे show करना है. Working number 5, whatever you have done you need to show here. Okay, so it will be 31,000 minus the 4,000, that is 27th. Distribution cost will be coming, sorry, we will be adding the impairment loss. Expenses are increasing, so 31,000 plus 4,000 will be 35,000 as the distribution cost. Everyone getting it? Distribution जो cost already है उसमें हमने impairment loss का expense add on कर दिया. We are just adding on, students, 4,000 impairment loss adding on to it. Okay, so that is very important to understand. Now coming back to administrative expenses, that is working number 4. So follow very carefully how we are going to work it. First, the basic working. सर व्हाट इज द बेसिक वर्किंग? इट इज 40,500. तो इसमें हमने एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस शो करा हुआ है 40,500 एंड एक्स्ट्रा यहाँ पर हमने 40,500. सर आपने यहाँ पर जो फैक्ट्री कॉस्ट थी उसको ऐड करा था 12,000 को, उन्होंने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव में डाला हुआ है. तो जहाँ पर एक जगह ऐड होता है वहीं पर सेकंड जगह पे वो सब्ट्रैक्ट भी होगा. तो 40,500 माइनस 12,000, दिस इज वेरी बेसिक. ओके, ये तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि 40,500 में से आपने 12,000 को माइनस करना है. नाउ कम्स द अनरियलाइज प्रॉफिट एडजस्टमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने फिर अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी है. सो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ओके, एवरीवन गेट मी फॉलोइंग गाइस? सो अनरियलाइज प्रॉफिट की हमने एडजस्टमेंट करनी होगी, फॉर विच वी कैन मेक द टी अकाउंट्स. ओके, सो अनरियलाइज प्रॉफिट बिफोर, in the unrealized profit using the draft, and unrealized profit now, unrealized profit after. Okay, unrealized profit after, and unrealized profit draft, and unrealized profit after. Getting it guys? With me following? Is everyone getting it guys? So very important to understand कि पहले कितना था unrealized profit और अब क्या आ रहा है, तो आपने वो एडजस्टमेंट करनी है. So it is very simple. If we look from the perspective of the old one, ठीक है guys, follow carefully. If we look from the perspective of the draft one, 25,000 यहाँ पर था transfer price and 27,500 थी transfer price. So if you look at opening inventory, so वो उसकी cost क्या आ रही थी? Guys follow carefully. Let's go back to the part A. Part A से इसकी help लेनी है. Opening inventory 25,000 है. At transfer price cost is 20,000, which means sir 5,000 is the opening unrealized profit. 5,000 is the opening unrealized profit. 25,000 cost and 25,000 transfer price, 20,000 cost. So the 5,000 is the unrealized profit. Students need to understand कि ये प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है. जो ओपनिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट होता है वो रियलाइज हो जाता है. व्हाट आई मीन बाय रियलाइज, क्योंकि जो ओपनिंग इन्वेंट्री के फिनिश गुड्स होंगे वो ड्यूरिंग द ईयर सेल हो जाएंगे. जो भी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो ड्यूरिंग द ईयर बिक जाएगी. तो ये प्रॉफिट इसीलिए रियलाइज हो जाएगा, इसीलिए क्रेडिट साइड पर आ रहा है कि ये 5,000 का प्रॉफिट आप रियलाइज कर लोगे. लेकिन ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज द एंड ऑफ द ईयर सर, तो ये प्रॉफिट अभी तक रियलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अभी तक बिका ही नहीं है. ये गुड्स एट द एंड ऑफ ईयर तक सेल ही नहीं हुए. ये गुड्स सर, दीज गुड्स एट द एंड ऑफ ईयर हैव नॉट बीन सोल्ड. सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका कहलाता है अनरियलाइज प्रॉफिट. इसको आप अकोमोडेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द मैचिंग एक्रूवल कॉन्सेप्ट के जो जिस साल का प्रॉफिट है वो उस साल में ही आएगा. तो इन दोनों का डिफरेंस जो है सर, ये ट्रांसफर प्राइस है, ये कॉस्ट है. ट्रांसफर प्राइस, ये कॉस्ट है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5,500 आ रहा है. 5,500 यहाँ पर आ रहा है कैरीड डाउन वैल्यू, विच मीन्स के 500 का एडजस्टमेंट थी पहले. इज एवरीवन गेटिंग इट? सो जो यहाँ कह रहे हैं ना, ये जो पॉइंट है, whatever they are, this statement that they are saying, the second statement, the increase in the provision for unrealized profit was included in administrative expenses. So basically they are saying कि उन्होंने 500 का जो प्रॉफिट था
वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डाल दिया। इज एवरीवन गेटिंग इट? उन्होंने 500 का जो एडजस्टमेंट थी फॉर द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, दे हैव पुट इट इन द, तो फर्स्ट थिंग विल बी सर कि इस 500 को माइनस करेंगे बिकॉज वो गलत है। वाई गलत है? क्योंकि वो उसमें मिस्टेक्स है ना, क्योंकि उसमें ये अकोमोडेट नहीं किया हुआ, एडजस्टमेंट नंबर 2 अकोमोडेट नहीं करी हुई, ठीक है, तो उसमें वो मिस्टेक है। और आप न्यू बनाएंगे तो न्यू कैसे आएगा? न्यू आएगा इसको यूज करके, जो आपकी ये वाली इन्वेंट्रीज हैं इनको यूज करके न्यू आ जाएगा सर कि 25,000, वो तो मैंने कहा कि रियलाइज हो जाता है, और 29,250 क्लोजिंग इन्वेंट्री का, तो अगेन 25,000 पे वही आपका 5,000 बनेगा। 25,000 पे आपका 5,000, सो ब्रॉट डाउन विल रिमेन द सेम, इट्स जस्ट द कैरी डाउन विल चेंज। वो आपको निकालना पड़ेगा सर। लेट्स डू इट हियर कि अगर, क्योंकि हमने उसका निकाला हुआ नहीं है, तो इट विल बी कि अगर आपकी 29,000, अगेन सेम प्रोसीजर, ओके, 29,250 अगर आपकी ट्रांसफर प्राइस है तो 125% पर है। आपको इसका अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है, अनरियलाइज प्रॉफिट 25%, तो डायरेक्ट इस बार निकाल लेंगे बाय अप्लाइंग द रेशियो सर। सो इट इज कमिंग 5,850, so 5,850 is the carried down value. Again, there is an increment of adjustment for the unrealized profit is sir basically $850 जो कि आपको ऐड करना पड़ेगा in the administrative expenses. Okay, so it will be 40,500 minus 12,000 for the error mistake, for the error sir, minus 500 for the previous unrealized profit adjusted, and the current जो current after correction of error आया, that is coming sir 28,850. So these are the two expenses we have worked it out, and eventually now we will get the profit for the air. Okay, understanding guys? Clear with me? Is everyone getting this? Any questions? Let me know. Any problems? Okay, so we are going to get the expenses and profit for the year after this working. Okay, is everyone following this? Clear? No issues, right? No problems. So it will be 118,750 plus 50,500 minus 28,850, 35,000 subtracted. So it will be coming 105,400. Okay. So that is how it will come, 105,400. That is the profit for the year. And we will get all 13 marks for this working. Okay, guys. Do have a look at it. Take a screenshot and try to revise, understand. Do let me know if there's any question as well. We can talk about it. Okay. Let me know, guys, any problems are there, so we can think about it. Okay. Okay, next we talk about, okay, what is basically part C is for 1 mark, that you have to state the accounting concept. So we have to state the accounting concept, guys. Everyone getting it? So we have to state the accounting concept being applied in the treatment of goods sent on the sale or return based on the item number 2. So now the theory part starts. Okay, we have to state the return basis sale of goods on return accounting concept which is being applied. So make sure it is called the realization concept, in which there are it is called the realization concept, which tells के realization concept भी कह सकते हैं या आप इसको prudence concept भी लिख सकते हैं, तो दोनों आंसर्स आपके करेक्ट होंगे स्टूडेंट्स। prudence concept कहते हैं, prudence concept भी यही कहता है कि अनअंटिल, अगर जब तक आपका गेन ना हो जाए, until you have received the gain, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब तक आपका गेन ना हो जाए आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब तक आपका सेल्स ना हो जाए आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप जब तक सेल्स, आपको पैसे रिसीव ना हो जाए, तब तक आप उस सेल्स को रिकॉर्ड ना करें। That is what the realization concept is. Everyone getting it? Guys, clear? And the last thing will be explain your treatment of the legal proceedings in item number 4, the adjustment that will be missed out. So again, IS coming into play here. Okay, sir, IS we have to talk about. So follow carefully which IS is this, sir. The company was facing legal proceedings in July. The company was facing legal proceedings in July 2023. The company's lawyers had advised that a company had a 35% chance of having to pay a fine of $8,000. Understanding, guys? So the company will have to it have a chance of 35% of having to pay a fine of $8,000. So first thing will be, which IS is it? It is basically IS 37, which talks about contingent assets and liabilities for 3 marks. 1 mark will be IS 37. You can write down contingent liabilities and contingent asset.
So IS 37 is 1 mark you will get, sir, for writing down which IS is it, and the second mark will, the other 2 marks will be for explaining, because it's there are 35% chance. Follow guys carefully. The 35% chance means 35% chance of the penalty, 35% chances of fine means that there is less probability, that there is less than 50% that there is less probability of the case being going against them. Okay, 35% एक कम percentage होती है, 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तब हम फिर penalty पे करते हैं, कि जो chances of fine means that there is less likelihood, or there is less likelihood कि ये less likelihood है या less possibilities है, you can write down less likelihood, less possibilities of having to pay the fine. ठीक है, less getting it guys, तो आपको फाइन नहीं पे करना पड़ेगा. Is everyone getting it? There are less chances of paying the fine because of 35% of chances, as it is not probable. एक अच्छा वर्ड ये है कि आप इसको मेंशन करें कि as it is not probable, कि ये जो है वो नहीं क्रिएट होगा, ये एक आपके पास एक आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी. सो यू कैन राइट इट डाउन, मेक श्योर ये पॉइंट लिखें एंड देन राइट इट डाउन. इट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी. ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है कि ये अभी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई बट फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है, लाइफ फ्यूचर में अराइज हो सकती है वो, लेकिन आपको फाइन नहीं पे करना पड़ेगा बिकॉज लेस चांसेस है उसके. तो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी का वर्ड जरूर लिखिएगा टू गेट द 3 मार्क्स. इट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड विल ओनली बी डिस्क्लोज इन द नोट्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस विल ओनली बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपको डिस्क्लोज जरूर करना होगा बिकॉज ये कंपनी है HPLC, दे विल हैव टू डिस्क्लोज इट इन द नोट्स ऑफ द financial statements. Okay, they will have to disclose the notes of the financial statements. Guys, getting it clear? So this is very important to write down the theory here. Okay, that's how you will get the 3 marks. Okay, this is how we can get the 3 marks. And the last concept will be the directors are considering stopping the application of factory profit. Okay, so the directors are considering to stopping the application of factory profit, कि वो factory profit apply करें या नहीं करें. We have to advise the directors whether or not to stop the application of factory profit. For 5 marks, we have to justify our answer. So we have to write the benefit and the drawbacks, both of them. Okay, why we should stop the application of factory profit and why we should not stop the application of factory profit. Getting it, guys? Everyone following with me? Okay. So if you are stopping, if you are stopping the factory profit, if the application of factory profit is stopped, it means, or you can write down the application of factory profit, the application of factory profit, the application of factory profit. So what could be the reason the application of factory profit should be stopped? Why, students, the application of factory profit should be stopped? बताएं, कोई reason बताएं? Anyone would like to share any reasons? It should be stopped because एक तो ये बात है कि factory profit एक realistic वो नहीं है. आपके पास एक percentage है 25%. It is not sure कि ये benchmark है. It is accurate percentage. Okay, so the rate can vary. Okay, the application of factory profit should be stopped because it is not accurate, as the rates can vary, because it is not accurate as the rates can vary, for different firms. Okay, as the rates can vary for different firms. Getting it, guys? Clear? Understanding? As the rates can vary. अभी यहाँ पर 25% है, कोई कंपनी 20% यूज करी होगी, कोई 30 भी यूज करी होगी. So that is one of the reason. Okay, understanding, as it is not accurate as rates can vary for different firms. Secondly, अभी हमने ये हमारा एक पॉइंट ऑफ, ये आप पॉइंट लिख सकते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड, कि अभी फैक्ट्री प्रॉफिट की वजह से सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी. सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, there is a lot of administration cost, there is lot of administration and accounting cost involved in factory profit, which means कि आपको एक, we need an accountant, you need a person, there is a lot of accounting and administration cost involved with factory profits. ठीक है, कि आपको एक बहुत सारी कॉस्ट करनी पड़ती है. there's a lot of accounting and administration cost involved related to factory profit. So there is this another problem, ये एक और problem आ गई. ठीक है guys, everyone getting it clear with me? Following? Understanding? Is everyone getting it clear? There is a lot of accounting and administrative costs involved. So एक और point ये भी लिख सकते हैं कि just the point that came in my mind, कि profit इससे affect नहीं होता. Profit is not affected, the overall profit is not affected
by the factory profit. Okay, वो फिर भी adjust हो जाता है because of the unrealized profit adjustment. So the overall profit is not affected by the application. The overall profit is not affected. So ये बहुत एक important point है कि आप ये भी लिख सकते हैं कि इसको stop करने का एक reason ये हो सकता है because the overall profit of the business वो basically affected नहीं होता. It is not affected. The overall profit of the business is not affected. Okay. Now अब इसके पॉइंट्स ही लिखने, रेड ब्लू और पर्पल में से दो पॉइंट्स लिखिएगा. सेकंड, अब अगेंस्ट की बात करते हैं कि वेदर और नॉट. सो दिया इन फेवर के पॉइंट्स अगर लिखें कि ये क्यों अडॉप्ट करना चाहिए और ये एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट क्यों होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फैक्ट्री में अलग वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्री का अलग एक अलग कॉस्ट आ रही होती है, तो वहाँ के एक्सपेंसेस को कंप्लीट करना है, तो इसीलिए वहाँ पर एक फैक्ट्री प्रॉफिट चार्ज होना चाहिए. फॉर एग्जांपल कोई अगर कोई एक बड़ी बड़ी कंपनी है तो वहाँ पर ऐसे ही होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के अलग एक्सपेंसेस निकालने होते हैं और ऑफिस जो इनकम स्टेटमेंट बनती है उसके अलग एक्सपेंसेस होते हैं. सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि वहां पर दोनों अलग अलग कॉस्ट चार्ज की जाए और अलग अलग प्रॉफिट हो. सो ये कह सकते हैं हम कि इसमें आप इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू in order to expenses fulfill करने के लिए, in order to fulfill the expenses, in order to fulfill the expenses, in order to fulfill नहीं करते, in order to cover the expenses, ये better word है, in order to cover the administrative expenses cost of the factory, in order to cover the expenses of the factory and the overhead, in order to cover the expenses and factory overheads, the factory profit needs to be charged. ठीक है, factory profit charge करना जरूरी है. Guys, following that, clear? The factory profit will need it to be charged. Okay, understanding? Any question? Okay, so in order to cover expense of factory profit needs to be charged. Similarly, factory profit help करेगा कि आपने क्या prices charge करनी है, okay, at the sales. So it will help in deciding the, it will help in setting the prices. It will help in setting the prices. ये cost क्या आ रही है? ये help करेगा. It will help in setting the prices. And whatever the cost is coming, so what profit margin you should set up, it will help in setting the prices of the product as well. And it will help in setting, so these are couple of points that are important. And then 1 mark is for your decision, students. You agree, so make sure write a good point. Because I believe के factory profit charge होना बहुत ज़रूरी है, because I'm linked with it, so I can completely say that the directors, so decision should be the director. You don't have to write the word decision, okay? The directors should adopt it because it will help. The directors should adopt. The directors should uh, apply the factory profit for their benefit. ठीक है, तो should apply the factory profit, and you can just complete the line by saying something that I should apply the factory profit as it is as it is beneficial as it is beneficial for the manufacturing businesses. Okay, तो आप ये भी point लिख सकते हैं. Getting it, guys? Clear with me? Following? With this ये question complete हो जाता है. Make sure revise and review it again. Very important. Later on भी review करेंगे exams के near में. So that is very important. We have completed this question. We'll continue in the next class with the other two questions that we have on club accounting and other parts. Okay. So everyone got this. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Bye.